Hello everyone. See, today we are going to discuss this topic of diseases and urine examination. Guys, you must have heard or seen doctors prescribing urine test if they want to find out what's wrong with our body or what kind of disease we are suffering from. Now, why they are doing so? How urine test is helpful in finding out the diseases? So basically, see, the functions of our various organs, it can be examined by urine. So just by urine examination, doctors can decide or doctors can understand the functioning of various organs. So this is the first reason. Now, these different types of urine test, okay, it's helpful. This urine test, it's very helpful to diagnose disease. So, urine test is helpful to diagnose disease. To diagnose means to find out. All right. Now, what are they exactly looking for in urine test? So, sometimes what happens is, see, these are some of the things, okay? So, they may try to look for the excess sugar, enzymes, blood, or other materials in the urine that can indicate dysfunction of some organs. So, any of these things are in excess in the urine. If the doctors are finding any of these sugar or enzymes or blood or any other such materials which are metabolic waste, if they find any of such things which is in excess in the urine, then they can find out the dysfunction of the organs accordingly. For example, if we see that if the doctor is finding the presence of sugar in the urine, now the presence of sugar in the urine indicates that the person may be suffering from diabetes. All right. And see, diabetes is a disease, okay? So, diabetes is a disease in which the sugar level in the blood increases beyond the normal value. See guys, our blood, it does have sugar level, but it has normal level of sugar level. So the sugar level may be of normal value in a healthy person. But if this value increase beyond the normal value, then in the urine test, it indicates the presence of sugar. So doctors can, look for the diabetes, and they can change their plan of treatment accordingly. See, what happens is some of the excess sugar is carried out by our body, out of the body through urine. And because of this function, doctors can identify whether the urine has normal value of sugar level or the higher value of sugar level. So because of this function of urine, of getting the excess sugar out of our body through urine, helps us or helps doctors to find out the level of sugar in the urine. So, with the help of urine test, doctors can find out the presence of sugar. Now, sometimes what happens that there is presence of blood also in the urine. Now, that's a sign of damaged kidney, because we know that kidney is actually helping all these, filtering the waste material, the metabolic waste material from the blood. And only these waste material is going out of the body, not the blood. The pure blood is going back to the body. But if our urine contains blood, okay,
So if there is presence of blood in the urine, then it's a sign of damaged kidneys or maybe damaged nephrons by some bacteria attack. Now what happens if the kidneys are damaged? So if kidneys are damaged, body waste have to be removed. Of course. So whatever the functions of removing these body waste from the out of our body, which kidneys are doing, that has to be done by something different process. And this artificial process, which is a medical process, it's known as dialysis. So in dialysis, it's a process. Dialysis is a process in which artificial kidneys are working outside the body. They are not inside the body, of course. So, if kidneys are damaged, then body waste have to be removed by a medical process known as dialysis. We can also see the kidneys being transplanted. So, kidney transplant is also the solution to the damaged kidneys. What happens is, in this damaged kidney is replaced by healthy kidney. And this healthy kidney is donated by someone, maybe some family members or maybe some other person whose kidneys, it's getting matched to the patient's kidney. They do all this matching with the help of some test again. So this is how, with urine test and with urine examination, doctors can actually find out diseases, they can diagnose diseases, and they can do a treatment accordingly. So क्या देखा हमने? हम बात कर रहे हैं डिजीज और यूरिन एग्जामिनेशन की. सी हमारे बॉडी के जो भी ऑर्गन्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं वो एग्जामिन किया जा सकता है यूरिन टेस्ट की हेल्प से भी. सो यूरिन टेस्ट हेल्पफुल हो जाता है डिजीज को डायग्नोस करने में. डायग्नोस करना मतलब फाइंड आउट करना. यूरिन में क्या होता है, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो होते ही हैं, बट वो सर्टेन नॉर्मल लेवल्स में होते हैं. अगर उससे ज्यादा है तो फिर बॉडी में और ये या तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम है. जैसे एक्सेस शुगर अगर है, एंजाइम्स हैं, ब्लड है या दूसरे कोई मटेरियल्स हैं यूरिन में जो कि इंडिकेट करते हैं डिसफंक्शन का होना कुछ ऑर्गन्स में. अगर शुगर ज्यादा है यूरिन में तो वो डायबिटीज इंडिकेट करता है. डायबिटीज एक डिजीज है जिसमें शुगर लेवल नॉर्मल वैल्यू से बढ़ जाता है बॉडी में. दैट इज इन ब्लड एक्चुअली. अभी ये जो ब्लड का सी यू डोंट हैव टू ओनली रिलाई ऑन ब्लड टेस्ट फॉर दैट, ओके. इसलिए क्या होता है कि कुछ एक्सेस शुगर जो होता है वो हमारी बॉडी में से निकलता है यूरिन के थ्रू, और इसलिए यूरिन टेस्ट भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट एंड टू डायग्नोस डायबिटीज. समटाइम क्या होता है यूरिन में ब्लड भी देखा जाता है, वो शायद इंडिकेट करता है साइन ऑफ डैमेज्ड किडनीज और डैमेज्ड नेफ्रॉन्स. सी ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर ब्लड है यूरिन में तो वो डैमेज किडनीज ही हो सकता है या किडनीज का या नेफ्रॉन्स से रिलेटेड ही प्रॉब्लम हो सकता है. ऐसा जरूरी नहीं है, बट दीज आर सर्टेन इंडिकेशंस. मतलब डॉक्टर्स उस डायरेक्शंस में काम कर सकते हैं. कभी कोई नॉर्मल इन्फेक्शन होता है तो भी ब्लड हो सकता है यूरिन में, राइट. नाउ इफ किडनीज आर डैमेज तो क्या होता है, बॉडी वेस्ट कैसे रिमूव होता है. अगर किडनी डैमेज हो गई, क्योंकि किडनी का काम है तो बॉडी का वेस्ट निकालना, अगर किडनी ही डैमेज हो गई तो बॉडी वेस्ट कैसे रिमूव होगा. तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको डायलिसिस कहा जाता है. डायलिसिस में एक मशीन काम करता है जो कि आर्टिफिशियल किडनीज की तरह काम करता है. तो हमारी बॉडी का पूरा जो वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, उस मशीन के थ्रू पास होता है और उसमें सारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो सारे फिल्टर हो जाते हैं और फिर ब्लड फिर से बॉडी में पास हो जाता है. तो इस पूरे प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं. सीवियर कंडीशंस में किडनी ट्रांसप्लांट भी सॉल्यूशन है. इसमें क्या होता है कि डैमेज किडनी को रिप्लेस कर दिया जाता है हेल्दी किडनी से. सो अगर कोई हेल्दी पर्सन अपनी किडनी डोनेट करता है, एक किडनी, ऑफ कोर्स सी वी हैव 2 किडनीज, राइट. सो
people, human being can survive on one kidney, on single kidney also, of course with the precautions. So अगर कोई डोनर मिल जाए किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो डोनेटेड किडनी से उसको रिप्लेस करने से, उसको ट्रांसप्लांट करने से डैमेज किडनी को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है और इस तरह से पेशेंट सर्वाइव कर सकता है. तो this is how these blood tests and urine tests are very helpful in finding out diseases and in diagnosing all these different types of diseases.